Assalamu alaikum. I'm Professor Shaida Niazi, and we were studying the topic of neoplasia. I hope आप लोगों को पहले 3 lectures समझ आए हों, because this is going to get complicated now जैसे जैसे हम आगे proceed करेंगे. So what is carcinogenesis? We are going to study the epidemiology of cancer. Now, regarding carcinogenesis, it is composed of 2 words. Carcino means the development of, carcino means cancer, that is carcinoma, and genesis is the formation of cancer. So carcinogenesis means the evolution of cancer, that how are cancers generated. So we are going to study in detail, and I think we will be taking 2 lectures regarding carcinogenesis. उसमें हम प्रिकर्सर लीजन्स भी करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट्स भी सारे करेंगे. So the incidence of cancer, it varies according to the age, the geography, geographical locales, the ethnicity, race, genetic background, etc., dietary habits, water content, फिर atmospheric pollution, कहाँ कहाँ हम रह रहे हैं, and it is more common in the older age group. But no age is immune, and nowadays even young children are seen who are having cancers. The geographical variation in the incidence of different type of cancers is due to the presence of different environmental exposures. For example, जो डाइट है, डाइट में बहुत सारे डिफरेंट कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं. इसी तरह the living standards of people, then dietary deficiencies of iodine can expose individuals to certain types of cancers like follicular cancer, thyroid, goiters, then gastric cancers. Now, gastric cancer is very common in the Japanese population because of the fact that Japanese, they take smoked meats and spiced foods. That's why Japanese people are more prone to the development of stomach cancer. Similarly, squamous cell carcinoma, which is a tumor arising from the squamoid cells, that is very common in the northern areas of Pakistan as well as in the Sindh ke areas, mein Karachi mein very common squamous cell carcinoma, because these are 2 areas jahan pe pan eating and betel nut chewing is very common. पान एंड बीटल नट के जो छालिया और पान और ये जो जितनी भी चीजें पान में डलती हैं, नस्वार हमारे नॉर्दर्न एरियाज के पठान बहुत ज्यादा खाते हैं. These are they all contain carcinogenic agents, and that's why oral cavity के cancers, which are squamous cell carcinomas, are very common in the northern areas of Pakistan, पठान्स वगैरह में, as well as in Karachiites, because of the fact that it acts as a dietary carcinogenic agent. Hepatocellular carcinoma, which is a cancer of the liver, that is very common in African individuals because of the fact that एक तो वहाँ पे hepatitis B and hepatitis C viral infections are very common. Number 2, they store their grains. Like peanuts वगैरह को वो store करते हैं, and those stored grains, they grow fungus on them. Stored grains आपने भी देखा होगा कि कभी पुरानी मूंगफली या बादाम पड़े रहे तो उनके ऊपर एक white सा ना एक powdery सा substance बन जाता है. That is in fact the growth, that is in fact the production of aflatoxins. Aflatoxin is a carcinogenic agent which is produced by certain strains of fungus. तो वो जो improperly stored grains होते हैं या हमारे ये dry fruits, peanuts वगैरह, improperly stored grains के ऊपर certain fungi they grow, and those fungi they produce certain chemicals which are known as aflatoxins, and aflatoxins acting synergistically with hepatitis B virus and hepatitis C virus, they cause the production of, they cause the initiation or the development of hepatocellular carcinoma.
The bladder cancer, urinary bladder का cancer, that is very common in Egypt because of the fact कि Egyptians का वहाँ का जो river Nile है, वहाँ पे schistosomia hematobium which is a parasite, वो वहाँ पे उन areas में बहुत common होता है. And those people who drink that water, उनके bladder के अंदर the parasite schistosoma hematobium, जब आप parasitology करोगे तब you will be reading the life cycle of schistosoma hematobium that grows in the bladder and that produces bladder cancer, especially in the Egyptian population. Then we have another parasite which can cause cancer of the gallbladder is Clonorchis sinensis. That is another parasite which can cause cancer of the gallbladder, not urinary bladder, gallbladder cancer, as well as cancer of the biliary apparatus, which are known as cholangiocarcinomas. So gallbladder cancer and cancer of the biliary apparatus is caused by the parasite Clonorchis sinensis. Urinary bladder cancer is caused by the parasite Schistosoma hematobium, and those cancers are very common in the Egyptian population. Similarly, abhi humne padha hai gastric cancer is very common in the Japanese population because unki jo diet hai that contains smoked meats and spiced foods. Then regarding the process of carcinogenesis, it is a multi-step process and it is a close interaction between multiple factors, which include environmental factors and genetic factors. Both acting synergistically, they contribute to the development of cancer, but environmental factors, they play a predominant role as compared to the genetic factors. Genetic factors में हमारी mutations वगैरह आ जाती हैं, and then there are certain families जिनमें carcinogenesis, it tends to run in families. Regarding genetic factors, breast cancer is one tumor which has a genetic predisposition. Family members, अगर माँ को cancer है, so the daughter should be very if the mother has breast cancer, the daughter should be very careful. कि अगर the grandmother has cancer, then ये इसी तरह एक cycle चलता चला जाता है, and they all have to be very careful because breast cancer में BRCA genes होते हैं, BRCA1 and BRCA2, उनकी genetic testing करते हैं, and these patients who have genetic predisposition to develop breast cancer, इनकी prophylactically इनकी breast की removal कर देते हैं, breast की भी removal कर देते हैं, प्लस इनकी प्रोफाइलैक्टिकली ओवरीज की भी रिमूवल कर देते हैं ताकि जो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर है वो इनका मिनिमाइज हो जाए. So regarding genetic factors, you should remember that breast cancer that can occur in families. It has a familial predisposition. उसके अलावा भी factors हैं, लेकिन genetic factors play a very dominant role in the etiology of breast cancer. इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स में हमारा मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड व्हिच अकर्स इन इंडिविजुअल्स हु आर, वो मेन सिंड्रोम्स आप लोगों ने प्रोबेबली किए हैं या नहीं किए, लेकिन मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम्स पेशेंट्स में मेडुलरी कार्सिनोमास फेमिलियल भी होते हैं, स्पोरेडिक भी होते हैं, दे टेंड टू अकर इन फैमिलीज. नाउ रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, we have the infectious agents. 15% of all cancers are directly or indirectly related to certain infectious agents, and amongst the infectious agents, on top of the list we have human papilloma virus. Human papilloma virus, ये हम डिटेल में भी करेंगे, इनकी certain serotypes हैं, कुछ serotypes हैं which cause benign lesions like squamous papillomas, and those serotypes are serotypes 6 and 11, and then there are certain serotypes which can cause cancer of the cervix. Cancer of the cervix is caused by HPV serotype, human papilloma virus serotype 16 and 18.
इसके अलावा अभी 33, 35 and human papilloma viruses are also implicated in the etiology of head and neck type of head and neck cancers. Then smoking, as you all know, smoking is the single most important environmental factor which contributes to 90% cases of cancer of the lung, and it also contributes to cancer of the mouth, the oral cavity, lip cancer, cancer of the oropharynx, larynx, esophagus, pancreas, bladder cancer, and of course 90% cases of carcinoma of the lung. Smoking plus alcohol, दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो तो फिर वैसे ही, both they have additive effects on one another. Then alcohol consumption, so smoking and alcohol. Alcohol causes cancer of the oropharynx, larynx, esophagus. It causes cirrhosis of the liver, and cirrhosis is considered to be a pre-malignant condition. Cirrhosis predisposes to hepatocellular cancer. Alcohol and tobacco, together they synergistically increase the risk of cancer of the upper airways and the digestive. So dietary foodstuffs, कलरिंग एजेंट्स, ये जो आजकल हम फूड कलर्स यूज करते हैं, आइसक्रीम्स में इतने ज्यादा फूड कलर्स हैं, टोमेटो सॉसेस में इतने सारे फूड कलर्स होते हैं, जर्दे का जो रंग होता है, दीज आर ऑल कार्सिनोजेनिक एजेंट्स. टोमेटो सॉस हम लोग कितनी यूज करते हैं रेड करने के लिए, जर्दे का कलर इतना यूज करते हैं, आइसक्रीम्स में इतने सारे कलरिंग एजेंट, दीज आर ऑल कार्सिनोजेनिक एजेंट्स. एंड इन फैक्ट हम food preservatives भी आजकल use करते हैं because we store the foods for long periods of time. That they are also carcinogenic and they predispose to colorectal cancer, cancer of the prostate, and cancer of the breast. Then obesity, 14% of cancer deaths in men and 20% of cancer deaths in females are attributed to being overweight. Then reproductive history, estrogen exposure. Excessive estrogen exposure, which is unopposed by or broken by a cycle of progesterone, increases the risk of cancer of the endometrium and cancer of the breast. So nulliparous females, those who have not given birth to any child, उनमें हर वक्त estrogen level ज्यादा रहता है because pregnancy अगर होती है तो that produces progesterone. तो जो प्रेगनेंसीज की वजह से एस्ट्रोजन का इफेक्ट काउंटर एक्ट हो जाता है, लेकिन इन नलीपेरस फीमेल्स, दोज हु हैव नेवर गिवन बर्थ टू एनी चाइल्ड, उनका साइकिल पूरा महीना नहीं टूटता, सो दे आर एक्सपोज्ड टू हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन unopposed by progesterone, and that predisposes to endometrial hyperplasia, and hyperplasia will then act as a pre-malignant condition to the genesis of carcinoma of the endometrium. Carcinoma of the endometrium is the inner lining of the uterus, which is shed, as you all know, with each menstrual cycle. मैम जी बेटा, जी जी. जो हमारी टर्म है उसका काफी ज्यादा सिलेबस है, मतलब सेलिनजी, बैक्टीरियोलॉजी, फिर इन्फ्लेमेशन, रिपेयर, नियोप्लेजिया भी ऐड, मतलब अगर इसको रिमूव कर दें. नियोप्लेजिया भी है बीच में जी बेटा, वो फिर आपको बात करनी पड़ेगी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, बिकॉज आपको पता है अब ये कोविड के डेज हैं तो वी आर ऑलरेडी रनिंग बैकवर्ड, हम थोड़ा सा वैसे ही पीछे की तरफ चल पड़े. ईद पे भी बहुत ज्यादा छुट्टियां हो गई तो हमारा वैसे ही बैकलॉग बहुत चल रहा है ना. आप HOD साहब से बात कर लें, प्रोफेसर ताहिर से बात कर लें, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, चलो. बीच में क्यों ख्याल आ गया आपको राइट इन द मिडल ऑफ द लेक्चर हैं? चलो बाहर. Okay, doesn't matter. Then the seventh are the amongst the carcinogenesis, we are doing the environmental carcinogens. So environmental carcinogens, those are those in which we are living with.
स्मोक है, फॉग है, स्मॉग है, आजकल तो फॉग इतनी विंटर्स में पड़ती है, द यूवी रेज ऑफ द सनलाइट, smoke emitting out from automobiles, industrial agents, and in Bangladesh, वहाँ का जो कुएं का पानी है that contains high content of arsenic, which is also a chemical carcinogen. Then workplace occupational hazards, जो भी हमारे जैसे ये asbestos workers हैं जो जहाज बनाते हैं, जहाजों की इंडस्ट्री में काम करते हैं, they nickel workers, plastic workers, benzene workers, asbestos workers are very prone to develop cancer of the pleura, which is known as mesothelioma. Benzene or cadmium compounds, chromium compounds, beryllium, arsenic, plastic workers, और ये जो हमारे wood cutters होते हैं, ये जब आरी चलाते हैं तो वो जो लकड़ी का जो बुरादा निकलता है, when they inhale it, they are prone to develop cancer of the nasal cavity. Sinonasal cancers are very common in woodworkers. ये जो तरखान वगैरह होते हैं, उनमें बहुत common. Then food chemicals we have already done. The colors and the preservatives which we use. आजकल आपको पता है कि ये जब आम पकते हैं या ये जो फ्रूट्स हमारे पकते हैं, तो पेटियों में उनको जब हम डालते हैं और फिर हम उनके ऊपर उनके अंदर एक छोटी सी थैली डाल देते हैं कि ये जल्दी पक जाएं, that agent is also carcinogenic, और वो पूरा जिस वक्त हम पेटी खोलते हैं तो आमों के ऊपर वो सारा मसाला लगा होता है, and that preservative is also carcinogenic. हमारी जो भिंडी है, भिंडी के ऊपर आपने नोट किया होगा कि छोटे 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 बाल लगे होते, उसके अंदर वो जो हम खाद यूज करते हैं और जो स्प्रेस हम फील्ड्स में यूज करते हैं कीड़े मकोड़ों को, वो सुंडियों वगैरह को आपने देखा होगा कि वो टीवी वगैरह पे भी एड्स चलते हैं वो कीड़ों मकोड़ों को खत्म करने का, दो स्प्रेस आर आल्सो कार्सिनोजेनिक. And if the vegetables and fruits and the foods are not properly washed, if they are not properly washed and not dipped for long periods of time in water, और हम उसी तरह उनको खाना शुरू कर दें, बाज दफा हम रॉ वेजिटेबल्स खा लेते हैं, गाजरें खा लेते हैं, मूलियां खा लेते हैं, सैलेड्स में डाल के रॉ वेजिटेबल्स दे लेते हैं, they also contain carcinogenic agents. So in order to prevent thorough washing, many times washing should be done. पर्सनल प्रैक्टिसेस मैम ये फूड जो कलर्स होते हैं आजकल तो वो FDA अप्रूव्ड मिलते हैं ना और सेफ मिलते हैं, क्या उनके अंदर भी होता है? बेटा मैं तो नहीं बिलीव करती कि ये FDA अप्रूव्ड हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. लेबल के ऊपर अच्छा चलो, जो हमारे जो अच्छे वाले ब्रांड्स हैं जो कि रिच पीपल अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे ये जो अच्छे वाले ब्रांड्स हैं, जैसे हमारे शिजान के ब्रांड्स हो, जो टोमेटो सॉसेस हो जाती हैं, या ये जो हमारे आप लोगों को पता होगा कौन कौन से इम्पोर्टेड होते हैं, जी, जो इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड होते हैं. इम्पोर्टेड चलो, लेकिन आप देखो कि हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की स्पेशली, वो छोटी छोटी दुकानों से जो होममेड टोमेटो सॉसेस होती हैं, उनके अंदर स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो रूह अफ़ज़ा है, कभी आप रूह अफ़ज़ा पियो, आप बाद में देखना आपके लिप्स सारे पिंक हुए होते हैं. यस मैम. अगर आपके हाथों को कहीं लग जाता है, आपका हाथ पिंक हो जाता है. These are the new ones. पुराने जमाने में जिस वक्त हम लोग रूह अफ़ज़ा पीते थे, इस तरह का कभी भी नहीं होता था कि हमारे हाथों पे या हमारे कपड़ों पे कलर लग जाए. Those were, I think, the authenticated. अब आजकल तो आपको पता है ना कि हर चीज में गड़बड़ हुई हुई, हर चीज में कोई ना कोई मिलावट हुई होती. So personal practices में पान and छालियाज वगैरह, medications like methotrexate. Now methotrexate, in fact, it is an anti-cancer drug, but this drug itself can also act as a carcinogenic agent, so it acts as a two-edged sword. Then foods which contain high fats, ये जो हमारे बहुत सारे जो हमारे ये जो फूड्स हैं जो कि हमारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, containing high fats, grilled meats, smoked meats and spices, they are all carcinogenic. Plus
अल्कोहल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन द एटियोलॉजी ऑफ सिरोसिस, एंड देन सिरोसिस एक्ट्स एज अ प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन। और सिगरेट स्मोक में 3000 कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, 3000 कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। Now, interaction between the environmental and the genetic factors are important in the genesis of cancer. Risk of cancer increases whenever the cell is proliferating rapidly, because जैसे जैसे cell repair inflammation होएगी, साथ साथ phenomena of cell repair and regeneration होगी, साथ साथ आपकी माइटोसिस होएगी। जितनी ज्यादा प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी होगी, जितनी ज्यादा म्यूटेशंस होंगी, जितनी ज्यादा माइटोसिस होगी, तो सबसे ज्यादा जो म्यूटेशंस होती हैं दे अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में सबसे ज्यादा इट इज एट द टाइम ऑफ माइटोसिस इनफैक्ट व्हेन म्यूटेशंस अकर। तो जितनी ज्यादा सेल में सेल साइकिल्स जितनी ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी होगी, जितनी ज्यादा माइटोसिस होंगी, इट इज एट दैट टाइम that errors and mutations are liable to occur in the various phases of the cell cycle. And this occurs in the repair which is associated with the process of chronic inflammation, tissue injury, hyperplasias, metaplasias and dysplasias. हमने कल और परसों हमने मेटाप्लेजियाज एंड डिस्प्लेजियाज पे काफी हमने टॉक की थी कि मेटाप्लेजियाज एंड डिस्प्लेजियाज, इफ द inciting irritating agent is removed, dysplasias and metaplasias they can revert back to normal. But if the inciting agent or the irritating agent that persists, it can ultimately lead on to malignant transformation, especially high grade dysplasia. And high grade dysplasia सबसे ज्यादा कहाँ प्रीडिस्पोज करता है? बताया था आपको, बताओ। लंग्स में? जी जी बताओ। Lungs and liver and lungs. लंग्स में तो है, लंग में इनफैक्ट मेटाप्लेसिया है, जिसमें उसकी ब्रोंकियल लाइनिंग एपिथेलियम जो होती है कोलमनर सिलिएटेड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्क्वेमस लाइनिंग। डिस्प्लेसिया का क्या बताया था, इतना बड़ा एग्जांपल दिया था, तस्वीरें दिखाई थी 2 3 4 5। Ovary, stomach. नो सर्विक्स दिखाया था ना, sin 1 sin 2 sin 3 सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया। डिस्प्लेजिया के ग्रेड्स बताए थे, माइल्ड डिस्प्लेजिया, मॉडरेट डिस्प्लेजिया, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया, अल्टीमेटली लीडिंग टू कार्सिनोमा इन साइटू, अल्टीमेटली लीडिंग टू इन्वेसिव कैंसर। कराया था ना बच्चों, सब कुछ भूल जाते हो हैं, क्या फायदा? बताओ मैंने कराया था कि नहीं कराया? अब कोई नहीं बोलेगा। चलो इतना तो कह दो कि नहीं मैडम आपने नहीं कराया है। क्या कराया था? कराया था ना, CS सर्विक्स का काफी सारा कराया था, और ये भी कहा था कि 4th ईयर में आप लोग इसको डिटेल में करोगे, एक चार्ट तक दिखाया आप लोगों। सो इट मीन्स कि कोई पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। सो कैंसर स्टेटिस्टिक्स इन पाकिस्तान, according to the epidemiological studies conducted by the WHO cancer registry in Pakistan, every year there are a total number of 150,000 new cases of cancer recorded for both sexes, both genders and all ages. 150,000 new cases. In males, head and neck cancers, they predominate, whereas in females, it is breast cancer, which is predominating in the recent past years. Or Hodgkin's disease is the most common cancer in the early age groups, यानी कि बच्चों में Hodgkin's lymphoma is very common, और बच्चों में हमारे brain tumors भी बहुत common. Now this is cancer statistics of males in Pakistan. Males में अगर आप देखो तो percentage है head and neck cancer. Males में head and neck cancer is the leading cause
हेड एंड नेक कौन से, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 20%। हेड एंड नेक कैंसर में कौन कौन से आ जाए? ओरल कैंसर्स, ओरोफेरेंजियल कैंसर्स, माउथ कैंसर्स, कैंसर ऑफ द लिप, कैंसर ऑफ द टंग, ये सारे हेड एंड नेक कैंसर्स में आ जाए। इनको इकट्ठा थायराइड कैंसर भी आएगा इसमें? थायराइड भी आ जाएगा, शाबाश, वेरी गुड। 20% हेड एंड नेक कैंसर एंड लंग कैंसर इट कॉन्स्टिट्यूट्स 11%। इसके अलावा मेल्स में बाइल, biliary tract and liver cancer 10.5%, Hodgkin's, non-Hodgkin's lymphoma 9.1%, prostate cancer 7.2% it is seen in males, colorectal, ये सारे हैं। सबसे ज्यादा कैंसर, बस इतना याद रखो कि पहले हमारे सबसे कॉमनेस्ट दो कैंसर्स आर कैंसर ऑफ द हेड एंड नेक एंड लंग कैंसर, मेल्स। फीमेल में आप देखो कि 45% are cancer of the breast, और फीमेल में head and neck cancer constitutes, ये अब second number पे females। Next is in children, बच्चों में commonest cancer in Pakistan is Hodgkin's disease. This is Hodgkin's disease. Hodgkin's disease is a lymphoma, and I told you कि lymphomas क्या है? They are malignant tumors of the lymph nodes. They are malignant tumors of the lymph nodes. Hodgkin's, फिर acute lymphoblastic lymphoma 18% and non-Hodgkin's lymphoma 10.5%. Gliomas are brain tumor. So अगर हम इन तीनों को इकट्ठे कर लें, ये तीनों हैं, क्या हैं ये तीनों? Lymphoid origin के tumors हैं। 20 plus 18 is 38. 38 plus 10 is 48%, almost 50% cases in children are, almost 50% cases in children are due to lymphomas, और बच्चों में second category कौन सी है? Second मैम फीमेल category के अंदर सेकंड कौन सी है? जी, फीमेल के अंदर सेकंड फीमेल कैटेगरी में कौन सी है? सेकंड है हेड एंड नेक कैंसर। मेल्स में हेड एंड नेक कैंसर सबसे पहले है और लंग कैंसर सेकंड है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर कॉन्स्टिट्यूट्स 45% एंड हेड, ये फीमेल्स का है चार्ट। फीमेल्स में 45% इज ब्रेस्ट कैंसर एंड हेड एंड नेक इज 18%। बच्चों में जब हम इन तीनों को ऐड करें 20, 18 and 10, so that comes around about 50% cancers are due to lymphomas. हाँ, और इसके अलावा gliomas are brain tumors. Gliomas constitute 8.7% cases. Bone tumors भी बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं। ये सारे ब्लास्टोमास ट्वाइस, रेटिनोब्लास्टोमा, नेफ्रो, ये हम आगे डिटेल में करेंगे। So the incidence of cancer, leukemias and lymphomas are common in children. Testicular cancers males में, और prostate cancer elderly men में। Prostate cancer elderly men में। So what are pre-malignant and precursor lesions, or the pre-malignant or the precursor lesion? Pre-malignant हम ये कहते हैं कि, or the precursor lesions are those which will ultimately, they are a danger or a warning signal. Okay, this is a precursor lesion. It can at any time get transformed into a fully malignant clone. So it is pre-malignant. Abhi malignant nahi hai. It is a precursor lesion. Precursor means के थोड़ा सा predisposing है. Predisposing है, तो it raises a red flag कि you can develop cancer. Pre-malignant या precursor lesions में देखो हमारे ये जिसने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का मैंने अभी आप लोगों का एग्जांपल दिया, हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया, ये अभी हम प्री-मैलिग्नेंट कंडीशंस करते हैं। So predisposing or pre-malignant conditions, they can be divided into three main categories: the chronic inflammatory conditions, the precursor conditions, and then we have the immunodeficiency states. Amongst the, सबसे पहले हम कर लेते हैं the chronic inflammatory conditions. Now जब भी, अभी हमने थोड़ा सा inflammation के बारे में किया कि whenever there is chronic inflammation होएगी तो there is going to be, it is going to be associated with increased
चांसेस ऑफ, जब इन्फ्लेमेशन होएगी तो क्या होगा, रिपेयर का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। जब रिपेयर होएगी तो रिपेयर में क्या चीज होगी, देयर इज गोइंग टू बी सेल प्रोलिफरेशन टू रिपेयर द डैमेज। जितनी प्रोलिफरेशन होएगी इट मींस के उतनी ज्यादा माइटोसिस हो रही है। जितनी माइटोसिस होएगी इट मींस दैट देयर इज एक्सेसिव एंड रिपीटेड राउंड्स ऑफ सेल रेप्लिकेशन, and those repeated rounds of cell replication means के cell cycle में हमारी चल रही है तेज shortened cell cycle timings, और जितनी ज्यादा हमारी proliferative activity होगी उतनी ज्यादा the cell is prone to develop mutations. सबसे ज्यादा mutations develop during the phases of the different cell cycles develop mitosis with, and this repeated rapid rounds of cell replication, they create a fertile soil for malignancy to develop, and errors will occur during this cell division, which then add up. एक error add up हो रही है, वो transmit हो रही है to the progeny, फिर एक और error add up हो रही है, वो फिर अपनी इस तरह different जो उनके daughter clones हैं उनमें इतनी सारी errors transmit हो जाती हैं, and they cause neoplastic transformation. The errors are going to add up. सारी mutations add up होती चली जाएंगी और एक defective तरह का mutated तरह का cell बन जाएगा, और वो जो mutated cell है वो जब divide, वो जब 1 से 2 में करेगा तो वो mutation को transfer करेगा, cell damage को, genetic damage को transfer करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 multiply करता चला जाएगा और एक malignant tumor mass बन जाएगा। Chronic inflammation, how does chronic inflammation lead to malignancy? It increases the pool of tissue stem cells, and stem cells का क्या function है? They are the regenerative cells. They can transform in stem cells. In आजकल तो stem cell therapy का बड़ा hype है, because stem cells, they can regenerative medicine, that is stem cells form the basis of regenerative medicine. They can transform into any type of cell जिसको हम चाहें in order to produce a normal type of cell. Stem cells is the new hype कि हम stem cell therapy करते हैं और बहुत सारी diseases को हम treat करते हैं with the help of stem cells. And stem cells are particularly susceptible to transformation because उनमें regenerative capacity बहुत ज़्यादा होती है. Then chronic inflammation also generates reactive oxygen species, that is reactive oxygen radicals, and those reactive oxygen radicals are directly genotoxic, means that they damage the genes, they are genotoxic. Number 3, chronic inflammation leads to chronic irritation. Irritation is going to lead to metaplasia, or metaplasia will get transformed into, if it is not reverted back, जो inciting irritating agent है, suppose metaplasia respiratory lining में हुआ है of chronic cigarette smokers, this metaplasia हो गया, बंदा cigarette पीता चला जा, he is not refraining from taking cigarettes, it will ultimately transform to dysplasia, and dysplasia will get converted into neoplasia, that is a neoplastic transformation. इसका example है H. pylori. H. pylori, it is a bacterium. It resides in the stomach. It resides in the crypts of the stomach, and it causes chronic gastritis, peptic ulcer and chronic gastritis. And this organism, it can cause a B-cell lymphoma of the stomach called maltoma. Malt का नाम आपने सुना होगा ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी होता है, हमारे वॉल्डियर्स रिंग में भी होता है, अपेंडिक्स में बहुत कॉमनली ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू हमारे लार्ज गट में बहुत ज्यादा होता है, हमारे हेड, हमारे नेक का जो वॉल्डियर्स रिंग है उसमें बहुत ज्यादा होता है. तो this chronic gastritis can lead to the formation of a B-cell lymphoma, which is known as a maltoma, mucosa associated lymphoid tumor known as a maltoma.
और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि whenever you control the H. pylori infection, this is one tumor which reverses back to normal. Maltomas, they revert back to normal as soon as you treat the patient for H. pylori associated gastritis or peptic ulcer. The other example of metaplasia transforming into कैंसर इज बैरेट एसोफेगस, वही जो कलोनिक मेटाप्लेजिया हो रहा है। ये मैंने आपको लोगों को डिटेल में बताया है, अब आप लोग ना पढ़ो तो अब मैं क्या करूं। बैरेट एसोफेगस इज मेटाप्लास्टिक चेंज of the squamous epithelium of the esophagus to colonic epithelium, जिसमें हमारे goblet cells होते हैं। This is colonic metaplasia and this will lead to, जो क्योंकि यहाँ पे कोलन का टिश्यू बन गया, तो this is going to lead to an adenocarcinoma of the stomach. वैसे esophagus का commonest cancer is squamous cell carcinoma because esophagus की सारी lining is composed of stratified squamous epithelium. लेकिन जो उसका distal end है, as a result of GERD, gastroesophageal reflux disease या chronic regurgitation की वजह से stomach के gastric juices जब regurg करते हैं, they regurgitate into the lower end of the esophagus, so they are going to cause metaplasia of the lower end of the lining of the esophagus. Squamous epithelium convert हो जाता है into colonic epithelium, and that colonic epithelium, colonic metaplasia will predispose to will be a pre-malignant condition. It will later on lead to adenocarcinoma or a gland forming tumor of the esophagus and not squamous cell carcinoma. इसी तरह स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ द ब्रोंकियल एपिथेलियम, ब्रोंकियल एपिथेलियम हमारा किस चीज से बना होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मोकर्स में इनटू स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, एंड वहां पे जो कैंसर ऑफ द लंग होगा दैट इज गोइंग टू बी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग. सिमिलरली celiac disease is a malabsorptive state in which the हमारे जो villi duodenum के होते हैं ना, जो duodenal villi, it is a malabsorption of the stomach of the duodenum. जो villi होते हैं वो हमारे flat होने लग जाते, rounded और flat होने लग जाते हैं instead of being finger like. That is what is known as celiac disease. And celiac disease also predisposes to a T-cell lymphoma, which is known as enteropathy associated T-cell lymphoma, and also adenocarcinoma of the duodenum. Duodenum is a part of the small intestine, proximal part of the small. Similarly, chronic hepatitis. Chronic hepatitis caused by hepatitis B virus and hepatitis C virus, if not controlled, if not treated, plus the effect of alcohol, it will lead to hepatocellular carcinoma. HCC is hepatocellular carcinoma. These were the inflammatory states which were leading to cancers. Now we come on to certain non-inflammatory hyperplasias or hormonal type of hyperplasia. For example, endometrial hyperplasia. Endometrial hyperplasia will lead to adenocarcinoma of the endometrium. Leukoplakia is a white patch of the oral cavity. Thickening of this, it is a patch in the oral cavity, and thickening of the squamous epithelium of the oral cavity or the penis or the vulva will lead to squamous cell carcinoma. Colon के जो villus adenomas हैं, they progress to colonic adenocarcinomas in 50% cases. For all practical purposes, villus adenomas or colonic adenomas are considered to be dysplastic adenomas. They are dysplastic, and 50% cases will ultimately progress on to cancer. Now then, हमने तीन पढ़े थे ना, chronic inflammatory conditions, precursor conditions, and immunodeficiency states. Now we come on to the immunodeficiency states and cancer. T-cell deficiency.
T cell deficiency predisposes to malignancy, especially those cancers which are caused by the oncogenic viruses, and T cell deficiency will lead to formation of lymphoma. AIDS patients, acquired immune deficiency syndrome patients, they have a predisposition to develop Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma is a vascular cancer. It is a vascular tumor and it is caused by the human herpes virus 8. So T cell deficiency leads to lymphomas. Patients with AIDS patients में भी तो deficiency है ना, it is known as acquired immune deficiency syndrome. So इनमें immune cells की deficiency है, so that predisposes also. AIDS patients में lymphomas की भी बहुत ज़्यादा chances होते हैं, Kaposi sarcoma बहुत ज़्यादा chances होते हैं, and जो lymphomas AIDS patients में होते हैं, they are known as body cavity large B cell lymphomas and CNS lymphomas. जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें 3 तरह के कैंसर्स बहुत कॉमन होते हैं. एक उनमें लिम्फोमास होंगे, लार्ज बॉडी कैविटी लिम्फोमास या सीएनएस लिम्फोमा. उनमें एनल कैंसर बहुत कॉमन होता है इन मेल्स और सर्विक्स का कैंसर होता है इन फीमेल्स. सो 4 कैंसर्स इन पेशेंट्स में बहुत कॉमन होते हैं जो कि एड्स के पेशेंट्स होते हैं. एक Kaposi sarcoma, एक लिम्फोमास which can be lymphomas of the central nervous system or large body cavity lymphomas, which are non-Hodgkin's lymphoma. बस आप लोग lymphoma याद रखें. Males में cancer of the anus और females में cancer of the cervix. AIDS patients, not only are they predisposed to developing malignancies, but they are also predisposed to developing certain viral, fungal, protozoal and bacterial infections like tuberculosis. AIDS के patients में TB is very common और वो वाली TB which is caused by the atypical type of mycobacteria. Childhood malignant tumors के नाम देख लो. Wilms tumor. Wilms tumor is a childhood malignant tumor of the kidney. Neuroblastoma is a tumor of the adrenal medulla. बच्चों में adrenal medulla का tumor. फिर leukemias होंगे बच्चों में which are blood cancers, ALL, acute lymphoblastic leukemia / lymphoma, Hodgkin lymphoma, Burkitt's lymphoma. ये सारे बच्चों के ट्यूमर्स की एक लिस्ट इम्तिहान में आमतौर पे वाइवा में पूछ ले. Hodgkin lymphoma, Burkitt's lymphoma, brain tumors, astrocytomas, medulloblastomas, ependymomas are very common. Retinoblastoma ये तो हमने डिटेल में हमने Cutson's two-hit hypothesis भी किया था, and retinoblastoma is a tumor of the retinoblastoma. नहीं sorry हमने Cutson's two-hit hypothesis अभी नहीं किया. Sorry, I'm sorry. Retinoblastoma is a tumor of the eyes. Retino से निकला है ना. Hepatoblastoma is a childhood tumor of the liver. Soft tissue sarcomas बच्चों में common होते हैं, which sarcoma botryoides and embryonal rhabdomyosarcoma. Teratomas, germ cell tumors of the ovary and testes. They can be benign, they can be malignant. हमने ये तो डिटेल में पहले लेक्चर में किया. Then bone tumors, osteosarcomas and Ewing sarcoma are 2 bone tumors which are malignant bone tumors which are very common in childhood. Thyroid का papillary carcinoma, and thyroid papillary carcinoma is usually seen as an environmental exposure to ionizing radiations. ये जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब जापानीज लोगों ने गिराया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, बाद में जो बच्चे पैदा हुए थे और जो बच्चे उस वक्त छोटे थे, एंड व्हेन दे ग्रू ओल्डर दे डेवलप्ड papillary carcinoma of the thyroid and they developed different varied types of malignancy. Thyroid papillary carcinoma is usually due to ionizing radiations. Most childhood malignant tumors, they have a primitive undifferentiated appearance. ये मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, बिल्कुल round blue cells. So they are the childhood malignant tumors are the blastomas, and they are known as the small round blue cell tumors of childhood. अब tumor like conditions are,
hemangioma. Hemangioma, as you all know, it is a tumor of the blood vessels. Most common location is on the face and scalp. Then we have lymphangiomas. जैसे hemangioma के blood vessels के अंदर blood होगा, lymphangioma के जो vascular channels हैं उनके अंदर lymph होगा. Lymphangiomas के they can be cystic and cavernous. Cystic hygroma which is filled with lymph. Then lymphangiomas are most commonly seen in the neck, axilla and mediastinum. Teratomas हमने बहुत डिटेल में किए थे. Gonadal हो सकते हैं, extra gonadal हो सकते हैं, और mature हो सकते हैं, which are benign, immature are malignant. Then there can be teratomas which are seen in the ovary and the testes, which are known as the gonadal teratomas. And then we have those teratomas which are which are seen in the midline structures, like the mediastinum में होंगे, brain के अंदर भी होते हैं, retroperitoneum and head. Now this is a picture showing a hemangioma. ये बच्चा है इसकी टांग पे, ये पूरा hemangioma. This is another hemangioma. This is a hemangioma which has completely destroyed half of the face of the child. हालांकि hemangioma benign tumor, and they grow along with the growth of the child, and these tumors they ultimately regress as the child grows older. This is another hemangioma on the nose. This is a microscopic image of a hemangioma. ये मैंने आपको पहले भी दिखाई है, blood filled vascular channels. This is a cavernous hemangioma, जिसमें cavernous means large. So the vascular channels are large in this case. This is known as a cavernous hemangioma. This is a cystic hygroma, which is known as a lymphangioma. Cystic hygroma का दूसरा नाम है lymphangioma. This is a sacrococcygeal teratoma. ये sacrum और coccyx के करीब है. This is a sacrococcygeal teratoma. Now these are some common tumors which are seen in children. 0 to 4 years age group में हमारे पास leukemias, retinoblastoma, neuroblastoma, Wilms tumor वगैरह ये सारे. 5 to 9 years में again leukemia, retinoblastoma, neuroblastoma, CNS tumors और ये सारी चीज. 10 to 14 years age group में हमारे पास bone tumors आ जाते हैं, thyroid cancer and Hodgkin's tumor. This is a table which shows 0 to 4 years tumors in childhood seen in 0 to 4 years, 5 to 10 years and 10 to 14 years. Now we come on to the carcinogenic agents, वो precursor lesions. ठीक है? Carcinogenic agents can be broadly divided into 3 main categories. We have the chemical carcinogens, then we have the radiation carcinogens, and then we have the microbial carcinogens. The radiation carcinogens are again divided into 2 types. Those which are due to the UV rays and those which are due to ionizing radiation. और microbial carcinogens में हमारे पास आ जाते हैं the oncogenic viruses and the oncogenic bacterial agents. हम आज करेंगे chemical carcinogens. Now the chemical carcinogens, regarding the chemical carcinogens, you should understand the initiation promotion concept. Both the initiators as well as the promoters are required for a tumor to form. अकेला initiator या अकेला promoter अगर होगा तो cancer develop नहीं होगा. Neither can cause cancer by itself. Both the initiators as well as the promoters are required. Initiators are the carcinogenic agents and they cause the, in fact, remember that the initiators, they cause the mutations. And the promoters, they always occur after the initiators. Initiators को follow करेंगे पहले नहीं होंगे. They always act after the initiators. They are not carcinogenic by themselves and their mechanism of action should always occur after initiation, not before. And promoters क्या करते हैं? They enhance the proliferation. Initiators induce करेंगे mutations. Promoters उन्हीं mutated cells को proliferate करेंगे और जब वो proliferate करेंगे
तो additional mutations उनमें add होती चली जाए. Chemical carcinogens, there are two basic steps which are involved in chemical carcinogens. So initiated cells, initiation means the production of a mutation. और इस mutation कैसे हम produce करेंगे? Cells are exposed to a sufficient dose of a chemical carcinogen. किसी chemical agents को expose करेंगे, and that chemical agent is going to alter the cell. It means that it is initiating a mutation in that cell. But initiation alone is not sufficient to produce a tumor. Initiation is going to cause permanent, rapid DNA damage. DNA damage hoti hi mutation. So initiation is going to cause DNA damage, and this is rapid, reversible, and it has memory. So this mutation is very rapid, it has memory, and it is irreversible. You cannot revert it back. The initiating chemical agents, अब कौन से agents होते हैं जिनसे हमने mutation induce किया? They are highly reactive electrophiles. Electrophiles होते हैं those which are deficients in their outer shell of electrons. They are they contain electron deficient atoms that react with the electron rich sites within a cell. The electron rich site hoti hain, they are the nucleus. So dono mein aapas mein interaction ho jata hai, and the targets of the initiators are the DNA molecules, the RNA molecules, and the protein molecules of the cell. Ab initiation always has to be non-lethal. Agar lethal hoegi to kya hoga? Lethal hoegi to means ke cell mar gaya. Ab jab cell mar gaya hai, तो वो मल्टीप्लाई तो नहीं करेगा, म्यूटेशन तो नहीं नेक्स्ट अपने प्रोजेनी को ट्रांसमिट करेगा. सो इनिशिएशन इन्फ्लिक्ट्स नॉन लीथल डैमेज टू द सेल. द डैमेज इट ऑलवेज हैज टू बी नॉन लीथल, नॉट लीथल. लीथल होएगा तो सेल तो मर जाए, and it has to be non-lethal damage, and the damage has to be severe enough so that it is not repaired by the DNA repair genes. So number 2 is the promotion. P se yaad rakho, P for promotion, P for proliferation. So the promoters can induce the tumors to arise from those initiated muted cells, but they are non-cancer forming themselves. They do not, a tumor will not occur. It will not arise if the promoting agent is applied before the initiated. So promoters always take origin after the initiator. Cellular changes which are produced by the promoters are reversible, and they do not damage the DNA of the cell. Promoters, P for promoters, they enhance the proliferation of the initiated mutated cells, which contributes to acquiring additional mutation. एक parent mutation तो आ गई है, which was the transforming mutation. और फिर इसके अलावा जब हम प्रोमोटिंग एजेंट अप्लाई करेंगे तो प्रोलिफरेशन सेल्स की ज्यादा होगी. जब प्रोलिफरेशन और ज्यादा होगी तो माइटोसिस ज्यादा होगी, माइटोसिस ज्यादा होगी तो और ज्यादा म्यूटेशंस मल्टीप्लाई करते. Promoters are chemical agents that are not mutagenic, but instead they stimulate cell proliferation and clonal expansion. और promoters में हमारे आ जाते हैं hormones, phenols, and drugs. Examples of promoters are hormone में आ जाता है unopposed estrogen stimulation of the breast and endometrium. And promoters का second most important example is the inflammation which is associated with inflammatory bowel disease, chronic hepatitis, and Barrett esophagus. These are all the promoters. This is a flow chart which is showing how initiation is taking place and how promotion is taking place. Initiation, electrophilic intermediates, normal cell, it is going to electrophilic intermediates that is electron deficient, and they will bind to the DNA which is present in the cell
and they are going to form adducts and permanent DNA damage. This is going to multiply because of the process of promoters, cell proliferation and all. This is going to generate a pre-neoplastic clone, which will acquire additional mutations, it will proliferate, and we will ultimately get a malignant clone. So chemical carcinogens, they may be natural occurring or they may be synthetic, and they may be either direct acting or they may be indirect acting. Direct acting एकदम आके तो cell के ऊपर act कर लेंगे, and they will require no metabolic conversion to become carcinogenic. And the indirect acting are those which firstly they have to be converted into their active metabolic agent. Direct acting तो फौरन ही अपना effect exert करेंगे, जो indirect acting होते हैं उनको पहले हमें एक active agent में convert करना पड़ता है. तो direct acting के examples of the alkylating agents like cyclophosphamide and chlorambucil. In fact, the interesting point is that they are used as chemotherapeutic agents for the treatment of cancer. इनको हम treat, they are used as chemotherapeutic agents for the treatment of cancer, और ये खुद भी chemical carcinogens हैं, ये खुद भी cancer produce करते हैं. So they are acting as a two-edged sword. Secondly, as a second cancer, they cause acute myeloid leukemia as a second cancer many years later. So these alkylating agents like cyclophosphamide and chlorambucil, they are used for the treatment of cancer like cancer of the ovary, leukemias and lymphomas, but they themselves can also act as carcinogenic agents. Then we have acylating agents. Indirect acting वो होंगे, obviously उनके नाम से पता चल रहा है, they will require metabolic activation or conversion to become the active carcinogen, and the active carcinogenic agent is known as the ultimate carcinogen. Examples of indirect acting are divided into four main groups. पहले ग्रुप में आ जाते हैं polycyclic पहले ग्रुप में आ जाते हैं the hydrocarbons. The hydrocarbons are of two types again, the polycyclic aromatic hydrocarbons and the heterocyclic aromatic hydrocarbons. The polycyclic are the fossil fuels, और इनके examples आ जाते हैं benzpyrene, which is present in soot. ये जो चिमनीज के अंदर जब हम कोला जलाते हैं तो वो काला काला आ जाता है ना, that is benzpyrene, and tobacco smoke. That causes lung cancer. And benzanthracene, when it is locally applied to the skin, it can cause skin cancer. So the polycyclic and the heterocyclic hydrocarbons examples are benzpyrene and benzanthracene. Benzpyrene is contained in cigarette smoke as well as in the black soot, which is produced by burning coal, and that causes lung cancer. Then we have benzanthracene, which if applied locally to the skin, it can cause skin cancer. Then the second category are the aromatic amines, amides, azodyes. And these amines, amides, and the azodyes they are used in the rubber industry and the dyeing industry. For example, beta-naphthylamine, which is used in the rubber industry, that causes bladder cancer. Azodyes, ये जो हमारे food colors में होते हैं, they can cause hepatocellular cancer. Then we have natural plant and microbial products. Aflatoxins का मैंने आप लोगों को बताया था कि it is a fungus. It is a chemical carcinogenic agent which is produced by certain strains of fungi which grow on improperly stored nuts, and they cause hepatocellular carcinoma, HCC, which is hepatocellular carcinoma in association with hepatitis B virus and hepatitis C virus. Betel nuts, ये जो छालिया होती है, it causes cancer of the oral cavity. Then in the miscellaneous group, we have the nitrosamines and the amides. And in the miscellaneous group, we have vinyl chloride, which causes angiosarcoma of the liver.
निकल, क्रोमियम, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये जो हम फसलों पे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज कर देते हैं, फंजीसाइड्स, दे आर ऑल कार्सिनोजन. So most of the chemical carcinogens, they require metabolic conversion in order to first get converted into their active component, and that active component is known as the ultimate carcinogen. And most of the chemical carcinogens, they are metabolized by the P450 cytochrome dependent monooxygenase pathway. And polymorphisms or mutations in the enzymes which control the cytochrome P450, it predisposes to the development of different types of cancers. So chemical carcinogens, they directly damage the DNA. Damaged DNA के अंदर होती हैं mutations, और mutations ultimately lead to the process of cancer formation. जी. Radiation carcinogens हम कल इंशाल्लाह. ये वाला लेक्चर मैंने कंटिन्यू करना है कल, तो आप